So today topic is that assessment methods in the undergraduate medical education. चूंकि अंडर हम इसमें डिस्कस करेंगे सो दैट्स वाई हमारी जो असेसमेंट मेथड्स होंगे मोस्टली दे विल बी टू द लेवल ऑफ अंडर जो बार बार जिक्र करेंगे स्टूडेंट्स का तो उनसे मुराद जो है दैट विल बी students of any discipline of health sciences, that may be the students of MBBS, the student of BDS, or the student of nursing sciences, rehab sciences, or the paramedical sciences. तो इन तमाम स्टूडेंट्स और इसके हम पर मुख्तलिफ levels होते हैं. Students who are in their initial semesters or suppose they are in their last semesters, तो दोनों के स्टूडेंट्स को हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये हम इसकी बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट विल बी द मेथड्स ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट मेथड्स जो हैं इससे पहले हम थोड़ी सी हम मिलर पिरामिड की भी बात करेंगे. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेक्चर्स डिस्कस करते हैं कि इनिशियली वी विल जस्ट टॉक अबाउट द मिलर पिरामिड कि मिलर पिरामिड है क्या चीज़, हु वाज द मिलर और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्या चेंज इसकी वजह से ये ले आया ये एजुकेशनल असेसमेंट में मिलर पिरामिड के बाद. और उसके बाद जो है जिन वी विल डिस्कस द वेरियस असेसमेंट मेथड्स which can be used to assess the knowledge of the undergraduate students of the health sciences. And after that, in the upcoming session, we will discuss, inshallah, the various assessment methods to assess the practical skills of the undergraduate students of the health sciences. क्योंकि ये दोनों अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, हम उनकी किसी वो क्या जानता है और वो क्या कर सकता है, इन दोनों जो हैं चूंकि अलग अलग एस्पेक्ट से, इसलिए दोनों के लिए जो असेसमेंट मेथड्स हैं ये भी अलग अलग होंगे. हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे. हर एक के हम ब्रीफली एडवांटेजेस पर भी बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस पर भी बात करेंगे और एक एटलीस्ट एक एग्जांपल हम सबका देंगे. जितनी भी हमारी स्पेसिफिकली नॉलेज जो हम अंडर ग्रेजुएट की चेक करते हैं तो उसके हर एक मेथड के साथ हम एक जरूर एक एग्जांपल्स जो है आपके सामने प्रेजेंट करेंगे. तो चलते हैं towards our first objective, that is the Miller prism of clinical competence, which is also known as the Miller pyramid. Miller pyramid, why it is known as the pyramid? Because pyramid is just like if we look at the graphical representation of this model, it look like a pyramid. That's why we known as a pyramid. And why it is known as the Miller? So that was the George Miller in 1990, and the reference, the citation for that work which published is this one in the bottom, and that is the assessment of clinical skill competence performance 1990. So जॉर्ज मिलर के मुताबिक एक चेंज आनी चाहिए और चेंज इसलिए ज़रूरी है कि 1980 से पहले जो उसने ऑब्जर्व किया कि मेडिकल स्टूडेंट्स की जो असेसमेंट होती है ज़्यादातर उसमें थ्योरी जो है मेन फोकस उसकी थ्योरी पर होती है और थ्योरी में भी जो है मोस्टली वहाँ पे वो ऐसे टाइप ये ज़्यादा होती हैं और ऑब्जेक्टिविटी उसमें बहुत रेयर होती है. उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स, उनकी जो प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसीज है उसकी कोई इस तरह खास तरह के कार नहीं था. तो उसने एक मॉडल पेश किया. उस मॉडल के मुताबिक जो है हर एक लेवल के लिए देयर शुड बी अ स्पेसिफिक असेसमेंट मेथड, नॉट लाइक दैट एवरी कैटेगरी में एवरी लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए हम एक ही असेसमेंट मेथड जो है यूज कर सकते हैं. तो उसने जो जितनी students है, जितनी भी डिफरेंसेस हैं उसने उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जॉर्ज मिलर ने. और हमारे सामने जो स्लाइड में आपके सामने दिस इज ये उनकी पूरी जो वर्क है यहाँ पे पब्लिकेशन है, ये उसकी मॉडल की ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विच इज कॉल्ड एज द मिलर pyramid. So Miller pyramid जो है this is basically the graphical representation of the model presented by the George Miller in 1990. और अकॉर्डिंग टू हिम उसने जो चार हायरार्की लेवल बताए किसी भी स्टूडेंट की ड्यूरिंग द असेसमेंट, तो ये चार थे नोज हाउ, शोज एंड डज. और यहाँ पे नोज से देखा जाए तो ये वो स्टूडेंट से रिलेटेड है जो specifically they have been कॉलेज into the लैपटॉप program. Recently, they have been enrolled in a program
So we are respect them. Yeah, if we are going to assist them through, so he knows what they know about such thing. एंड जैसे ही फिर हम उससे थोड़े से हाई लेवल पे जाएं तो knows how, which is actually the elaboration, the comprehension, what they are known to, the understanding what they are known to. And after that, being checked their factual knowledge, then shows what they can. This is then the practical examination. And again, practical examination, according to him, should be divided into two. It should be on the simulations, should be in the control environment, and next it should be real life environment, like in the hospital, in the wards, in the clinics, in the when the patient they are real life. So the initial hierarchy, according to him, that can be checked through the fact different assessment method, like the MCQs, like the true pulse, the A type MCQs, the R type MCQ. Similarly, knows how they can be checked through the different EMI or the EMQ, essay type, short answer question, long essay question, the key features question, as well as the newly introduced method, which is known as the SCT, the script concordance test. This is one of the assessment method. And then if we came towards the shows and does, which is actually the practical examination. सो क्योंकि हम अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ही रोकेंगे शोज, क्योंकि डज जो है बेसिकली ये उनकी असेसमेंट होती हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं एंड दे आर प्रैक्टिसिंग इन द रियल लाइफ, दे आर वर्किंग इन हॉस्पिटल, दे आर वर्किंग इन द क्लिनिक्स, वो प्रैक्टिशनर्स बन गए हैं। तो फिर वहां पे हम इनकी अगर सपोज पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं डॉक्टर साहिबान और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान assessment जो होगी, so there will be in this category, which is through the direct observation या the workplace based assessment, various other assessment there also, but we will not discuss these methods as these are concerned with the postgrad students. So we will discuss mostly these three knows how and shows levels of the Miller pyramid. According to the Miller pyramid, so initially जब हम MCQs या ट्रू फॉल्स या ए टाइप आर टाइप क्वेश्चन करते हैं, सो ये हम उन स्टूडेंट से मोस्टली करते हैं सो व्हेन दे आर न्यू, दे आर नोवाइस, और जैसी जैसी यो उनकी प्रोफेशनलिटी जो है वो आ जाती है उनमें, उनमें जैसी जैसी मेच्योरिटी आती है तो उनमें हम उनकी जो असेसमेंट मेथड है दे शुड बी चेंज्ड, एंड व्हेन दे रीच देयर क्लिनिकल साइंसेस देन दे शुड बी असिस्ट फॉर देयर क्रिटिकल दिया प्रैक्टिकल स्किल्स एज वेल, कि किस तरह वो एक किसी क्लिनिकल प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम मिलर पिरामिड को ही यूज करेंगे, और ये तकरीबन तमाम हेल्थ साइंसेज, नर्सिंग साइंसेज या हेल्थ साइंस, मेडिकल साइंसेज में ये मिलर पिरामिड ही यूज होती है कि यहाँ पे जो है आस्की भी होती है, यहाँ पे एमसीक्यूज भी होती हैं, यहाँ पे शॉर्ट से क्वेश्चन भी होती हैं, बट देन ये डिपेंड करता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। लेकिन ये वो अलग बात है, हम यहाँ पे हम तमाम पॉसिबिलिटीज जितनी भी हैं उन तमाम की डिस्कशन करेंगे, जो प्रैक्टिस में है, जो प्रैक्टिस में नहीं है, जो नए हैं, जो यहाँ जिनकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज अच्छे हैं, जिनकी अच्छी नहीं है, हम तमाम को ब्रीफली जो है वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपने स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव और बिहेवियर एंड साइकोमेट्रिक डोमेन असेस कर सकते हैं। तो अगर असेसमेंट की बात की जाए कि हाउ वी कैन असेस द नॉलेज ऑफ आवर स्टूडेंट, so this is one of the most commonly assessment which is used is the written method, और इस written methods की ही जरिए हम जो है उनकी नॉलेज कर सकते हैं। इसके अलावा वर्बल मेथड भी हैं जो वाइवा होते हैं, लेकिन नाउअडेज वाइवास जो है दे आर नॉट इन प्रैक्टिस, उसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज है, जो उनकी रिलेबिलिटी उस तरह नहीं होती, उनकी वैलिडिटी भी इस तरह नहीं होती, कंटेंट वैलिडिटी स्पेसिफिकली उनकी इस तरह नहीं होती जो होनी चाहिए। जैसी प्रैक्टिस में आया होता है कि बास क्वेश्चन जो है मुश्किल होते हैं, एक स्टूडेंट से मुश्किल क्वेश्चन की जाते हैं, दूसरे से आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कंटेंट वैलिडिटी जो है वो नहीं रहती उसमें। दूसरी बात रिलेबिलिटी की, चूंकि हमने ये डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं रहता, सो दैट्स व्हाई
वर्बल वाइवा जो है दैट इज नॉट नाउ इन प्रैक्टिस, और ये इसकी यही डिसएडवांटेज की वजह से ये डिस्करेज किया जाता है कि वाइवास के बजाय देयर शुड बी सम अदर डिफरेंट मेथड्स विच इज एटलीस्ट देयर, अगर उनकी रिलेबिलिटी अगर कम है तो एटलीस्ट उनकी जो कंटेंट वैलिडिटी है, फेस वैलिडिटी है या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, एटलीस्ट दैट इज अप टू द हाई लेवल। तो यहाँ पे जो रिटन मेथड है दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, और इसलिए हम मोस्टली जो मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे दे विल बी रिलेटेड टू द दैट रिटन मेथड। और इस रिटन मेथड के पे सेवरल मेथड्स है जो हम अभी इनलिस्ट करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन एक जनरल सी बात होती है, अक्सर हम एज अ टीचर्स या एज अ एक्सपर्ट समझते हैं कि एमसीक्यूज जो है that only fit for assessing the exact discrete knowledge, जो उनकी फैक्चुअल नॉलेज है उसको असेस कर सकते हैं, लेकिन उनकी क्लिनिकल रीजनिंग, उनकी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ये हम एमसीक्यू से असेस नहीं कर सकते। बिल्कुल असेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त जो है ये है कि एमसीक्यू जो है इसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट किया जाए। अब ये इंशाल्लाह चूंकि एमसीक्यू कॉमन यूज होते हैं, तो इस वीकेंड के बाद जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीकेंड में हम एमसीक्यू को स्पेसिफिकली जो है कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज द एनाटमी ऑफ एमसीक्यू, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी ऑफ एमसीक्यू, व्हाट आर द पैथोलॉजीज ऑफ द एमसीक्यू, व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ द एमसीक्यू, और किस तरह जो है हम इसमें कॉमन मिस्टेक जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, कुछ इस तरह की वॉइसनेस मिस्टेक होते हैं, तो ये एक अलग इसमें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे में हम कि व्हाट आर द एमसीक्यू और उसकी रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे ये बात जो सिर्फ यहाँ पे जिक्र करूं कि अगर प्रॉपरली हम कंस्ट्रक्ट करें, अब व्हाट वी मीन बाय द प्रॉपर एमसीक्यू ये थोड़ा बहुत यहाँ पर भी मेंशन होगा, and that will be discussed in detail in the upcoming weekend, that what we mean by a properly constructed MCQ। तो अगर ये प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट किया जाए, इस पर सही तरीके से तवज्जो दिया जाए और इसकी सारी इनाटमी की जितनी भी हैं और पैथोलॉजीज जो पॉसिबल हैं और रिकवर किया जाए, तो इट इज कैन एमसीक्यू कैन आल्सो बी यूज्ड to check the clinical decision making or the clinical reasoning of our undergraduate students। तो और ये भी है कि जब हम स्टूडेंट्स से कुछ असेस करना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि हर एक लेवल पे एमसीक्यू की ये दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है ज़्यादा होती है, इसकी रिलेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन बाज़ जगहों पे जो है वी हैव टू इंकॉर्पोरेट सम अदर मेथड एज वेल, विच इट मीन कि हर एक की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते रहते हैं। देयर शुड बी ए प्रॉपर एग्जामिनेशन, वही होगा जिसमें देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स, जिसमें एमसीक्यूज भी होनी चाहिए और जिसमें शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन भी होनी चाहिए। सो रेदर देन अगर हम सिंपल एमसीक्यूज पे जाए तो उसकी भी बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, और अगर हम शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन पे सिर्फ जाए तो उसकी भी डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि कोई भी सिंगल फॉर्मेट जो है दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट परफेक्ट। इसकी एक इनफ नहीं होगा पूरी कुरिकुलम को असेस करने के लिए। दैट्स वाई वैरायटी ऑफ फॉर्मेट जो है ये जरूरी है। ये वैरायटी ऑफ फॉर्मेट जो है क्या हो सकते हैं, सो दे कैन बी द ए टाइप which we call as the one best answer or the simple multiple choice question. Sometimes they are also known as the best choice question, the BCQ, BSQ, the BCQ, sorry, the best choice question. There, another there is a modification of this common A-type MCQ known as the R-type MCQ, which is also known as the extended matching item, the EMI, also known as the extended matching question, the EMQ. After that, there is the key features question, the KFQ, the short answer question, the essay question, and the modified essay question, and the newly introduced method, which is known as the script concordance test or the CST. Among all of them, the modified essay question, the essay question, the short answer question, they have some sort of subjectivity, while the key feature question, the multiple choice question, the A-type MCQ,
and the ACT, they have objectivity, and that's why they have some superiority among all these. And if we look at around our different examination centers, so we might have this A type MCQ and the short answer question abundantly. But short answer question, they are best for the factual knowledge. But if we are going to check the clinical reasoning, are the clinical decision making, and in the unexpected situation, in the uncertain situation, in the atypical routine situation, so then the script concordance test is the best option. Similarly, the key feature questions, they are the best replacement of the short answer question, though still short answer question SAQ, they are in practice, and there is no such practice of the key feature question. But if they are replaced by the short answer question, if they are replaced by the key feature question or the script concordance test question, then there will be मच मोर उसकी वैलिडिटी और भी बेहतर हो जाएगी. लेकिन ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ, इफ द स्टूडेंट्स आर इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, देन वी कांट आस्क द क्वेश्चन लाइक द स्क्रिप्ट कंकॉर्डेंस टेस्ट, बिकॉज स्क्रिप्ट कंकॉर्डेंस टेस्ट के लिए थोड़ी सी हाई नॉलेज, और हम उनकी जो लास्ट ईयर्स में उसको से पूछ सकते हैं, लेकिन इनिशियल ईयर्स में हम इससे स्क्रिप्ट कंकॉर्डेंस टेस्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते एसीटी टाइप. नहीं, इनसे हम मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं ना, हम इससे की फीचर क्वेश्चन कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई अगर हम वी आर असेसिंग द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन द इनिशियल ईयर, then the multiple choice question and the short answer question, they are the best methods. चलते हैं इनकी तरफ की एक एक की जो थोड़ी सी ब्रीफली हम कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज कुछ प्रोज एंड कॉन्स एंड विद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. Multiple choice question, the most commonly, no doubt, that is the most commonly method used for the written assessment method for the assessment of knowledge. जिसमें से usually the student have to select a single answer among the 3, 4 or 5 option. Commonly जो है they are 4 in number, but they can be at 5, they can be 3. They are very easy to construct, लेकिन जिस तरह ये लगता है कि they're easy to construct, that's quite difficult to construct a proper structured MCQ. लेकिन इसकी जो reliability है, specifically per hour testing reliability, ये बहुत ज़्यादा है, अच्छी है. Now it is the medical education term which known as the reliability per hour testing. से मुराद क्या है? अगर हम कुछ स्टूडेंट्स को 60 मिनट में 50 एमसीक्यूज दे देते हैं कि यू हैव टू सॉल्व दिस एमसीक्यूज इन 1 आवर 60 मिनट, तो हम 90% प्लस श्योर है कि तकरीबन तमाम स्टूडेंट जो है इन 60 मिनट में ये 50 एमसीक्यूज कर सकेंगे. इसी तरह जो है हम बार बार अगर ये एक्सपेरिमेंट करें तो बार बार हमें जो है अच्छी यही मिलेगा कि यस 50 मिनट दैट कैन बी सॉल्वेबल एंड 60 मिनट. यही बात अगर हम फिर आगे जो अपकमिंग मेथड्स है, सपोज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, ये हम उनको 60 मिनट में 10 शॉर्ट क्वेश्चन दे दें कि ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन है और स्टूडेंट जो है यू हैव टू आंसर दीज 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इन 60 मिनट, तो हम श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं कि दे हैव टू राइट व्हाट दे नो अबाउट दैट क्वेश्चन, क्योंकि वो समझते हैं कि जितना हम जानते हैं, जितना हम ज्यादा लिखेंगे वी विल हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. दैट्स व्हाई मोस्टली उनसे टाइम खत्म हो जाता है और इनका क्वेश्चन जो है रह जाते हैं. तो फिर उसको हम मेडिकली जो एजुकेशन टर्म में कहते हैं कि दे हैव लेस रिलेबिलिटी पर आवर टेस्टिंग. यही वजह होती है कि नाउ अडेज एवरी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लें और एजुकेशनल जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ले लें, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट ले लें, तकरीबन all sort of examination जो है मोस्टली दे आर यूजिंग द एमसीक्यू जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हाई रिलेबिलिटी पर आवर ऑफ टेस्टिंग की वजह से. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम एग्जामिनेशन से किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन से एमसीक्यू को नहीं निकाल सकते. maybe there are disadvantages. This is not the perfect, that this is not flawless कि भाई फ्लॉलेस की इसमें कोई गलती नहीं है, बट अगेन जो है इसकी यही एक हाई रिलेबिलिटी की वजह से दे आर द मस्ट पार्ट ऑफ द एनी असेसमेंट मेथड. That's why inshallah we will discuss them in detail in the upcoming sessions.
Um, अब अक्सर एमसीक्यूज जो होते हैं दे आर मिसकंस्ट्रक्टेड, लाइक हम ये देख चुके हैं कि नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव होते हैं, बोथ एंड सी, एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट की होमोजेनिसिटी जो है नहीं होती वहां पर। यूजुअली हेट्रोजेनिसिटी हम ज्यादा जो है प्रैक्टिस में देखा जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाउ मच द जो ऑप्शंस होते हैं किसी भी एमसीक्यू का, कि हाउ मच दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, एंड इनकी जो डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे, इनकी जो लिंकिंग होती है, इफ दैट इज मच स्ट्रांगर, सो दैट विल बी अ वेरी गुड एमसीक्यू। बट समटाइम इस तरह होता है कि उनकी जो लिंक होती है, इंटरलिंक, या जो हेट्रो होमोजेनिसिटी जो है, जिसे हम जो है हम होमोजेनिसिटी कहते हैं, ये अक्सर नहीं होता। एक पेपर था, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, पैथोलॉजी का पेपर था। मैं डिसिप्लिन का नाम नहीं लूंगा, टीचर्स का भी नाम लूंगा, बुरी बात है। पेपर उनको कहा गया कि आप पेपर बना लें, पेपर बन गया, ये केमयू की ही कहानी है। और वहां पे फिर ये मतलब मिड टर्म की एग्जाम के बदले या फाइनल टर्म की ले ले, मैं थोड़ी सी इसको जनरल रखूंगा। वहां पे पैथोलॉजी के पेपर में जब एमसीक्यू आ गए, तो एमसीक्यू इस तरह थे कि सपोज पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो पहला ऑप्शन था डिजीज, उसके बाद द मंडे ट्यूसडे वेंसडे, इस तरह के ऑप्शन थे। अब ये माने ये इसमें हाई लेवल ऑफ हेट्रोजेनिटी है। आप इसमें देखिए होमोजेनस नहीं है। दाल ऑफ द ऑप्शन दे आर हेट्रोजेनस, एवरीबॉडी विल एंड एवरी स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड दैट यस, इफ द डिजीज पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज है या नहीं है, लेकिन द मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो हो नहीं सकती। इस तरह उन्होंने तीन ऑप्शन, कभी रेड व्हाइट ब्लू यूज की थी, तो कभी विंटर और सीजन, इस तरह सीजन नेम यूज की थी। तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज इस तरह थे। अब अगर ये इस तरह की प्रैक्टिस हम देखे इस तरह की प्रैक्टिस को, तो होगा क्या कि हमारे जो जस्टिफाइड असेसमेंट नहीं होगी। तो यही होता है कि ओपनली जो है दे आर मिसकंस्ट्रक्टेड। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन सही तरीके से की जाए, सो न सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज, बल्कि जो प्रॉब्लम सॉल्व स्किल्स है, ये भी हम स्टूडेंट्स की चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम जो है कंटेक्स्ट फ्री मोस्टली दे देते हैं, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम। टाइम तो हमारे पास ज्यादा होता है, लेकिन यूजुअली हम जो है एमसीक्यूज बनाने के लिए वो टाइम नहीं देते, यूजुअली हम इधर उधर से शॉर्टली बना लेते हैं। तो कंटेक्स्ट फ्री एमसीक्यूज मोस्टली होते हैं। अगेन, इफ दे आर कंटेक्स्ट रिच एमसीक्यू and if they are properly constructed, so that is one of the most strongest assessment method for the assessing of the knowledge of the student. जैसे हमने कहा कि कंटेक्स्ट फ्री, कंटेक्स्ट रिच, इसको कंटेक्चुअलाइजिंग कहा जाता है मेडिकल एजुकेशन में। व्हाट डज इट मीन, ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे कि कंटेक्चुअलाइजिंग का क्या मतलब है। स्पेसिफिकली कंटेक्चुअलाइजिंग ये वहां पर इम्पोर्टेंट होती है जहां पर हम कोई क्वेश्चन जो है ये क्लिनिकल साइंसेस के बारे में होता है। तो वहां पर फिर ये जो क्लिनिकल सिनेरियोज होती हैं या विनिटीज होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देनी। समटाइम इस तरह होता है कि टू मच इंफॉर्मेशन दे आर लोडेड इन अ सिंगल दैट विनिटी और दैट क्लिनिकल सिनेरियो, और वहां पर उसकी इम्पोर्टेंस जो है फिर वो उतनी नहीं रहती। यानी वहां पर लेस इंपॉर्टेंट डेटा बहुत ज्यादा आ जाता है, कि लंबी कहानी लिखी जाती है। सो व्हेन वी आर राइटिंग अ विनिटी, व्हेन वी आर कंटेक्चुअलाइजिंग एन एमसीक्यू, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हमने वहां पे वो इम्पोर्टेंट डेटा सिर्फ देनी है जिनका उस क्वेश्चन के साथ ताल्लुक हो, और ज्यादा जो है और डिटेल जो है इसको एवॉइड किया जाए तो बेहतर होगा। तो हम बात कर रहे थे इसका कंटेक्स्ट फ्री, कंटेक्स्ट रिच का। तो उसके जाने से पहले थोड़ा सा हम इसकी जो बेनिफिट से बात करेंगे कि व्हाई एमसीक्यू दे आर द बेस्ट। एक तो हमने डिस्कस किया कि दे हैव high reliability for our testing, and we are very sure that how much time is required for the solution of these um, questions. Another जो उसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हाई वॉल्यूम ऑफ कंटेंट दे कैन बी असेस्ड। आप 100 एमसीक्यूज में, अब 100 एमसीक्यूज सपोज टास्क जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इनिशियल, इस पर भी हम एक सेशन लेंगे दैट व्हाट वी मीन बाय द टास्क, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द टास्क।
अगर हम कुरिकुलम में 100 MCQs बनाते और हर एक चैप्टर से, हर एक वहाँ पे मॉड्यूल से, हर एक थीम से कुछ ना कुछ MCQs आ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 90+% कुरिकुलम जो है उसमें कवर किया जा सकता है. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द MCQ, दैट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट कैन बी असिस्ट इन द एग्जामिनेशन, रेदर देन अगर आप शॉर्ट इस क्वेश्चन और लॉन्ग इस क्वेश्चन पे जाएं तो वहां पर बहुत कम सैंपल जो है ये असेस किया जाता है. एंड दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज फॉर सच क्वेश्चन. तो सेकंड एडवांटेज ये है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट जो है, ह्यूज सैंपल जो है हम असेस कर सकते हैं थ्रू द MCQ. The third benefit, the third advantage of the MCQ is that there is no need of any expert person or subject specialist for the checking after the examination. एग्जामिनेशन की जो है एक्सपर्ट अपनी पेपर के साथ की प्रोवाइड किया दे देता है, और फिर जो एग्जामिनेशन स्टाफ है दे कैन जस्ट चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज दैट एग्रीमेंट, देखते हैं कि इनकी के साथ क्या मैचिंग है, कितनी क्वेश्चन कितने गलत है कितने ठीक है, दे कैन चेक दैट. इसके अलावा जो है अगर हम थर्ड फोर्थ बेनिफिट पे देखें तो उसकी मार्किंग में बहुत कम टाइम लगता है. और आजकल तो स्कैनिंग का दौर है, पेपर जो स्कैन विद इन मिनट्स जो है, पेपर 100 MCQs जो है ये स्कैन की जाती हैं. तो ये इसने और भी इसको बेहतर और लेस कंज्यूमिंग बनाया हुआ है, और इसकी वजह से इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है ये भी बहुत कम यूज होती है. फिफ्थ, बल्कि फिफ्थ हम HR को कर लें तो सिक्स एडवांटेज ये भी है कि इट इज लेस कॉस्टली. अगर हम देखें ना इसमें से MCQ को चेकिंग और विकास एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट हायर नहीं होगा, इसकी चेकिंग नहीं होगी, तो ये तमाम बेनिफिट्स की बात जो है वी कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड यूज्ड टू चेक द that is the knowledge of our undergraduate student. So this is example of A-type MCQ. We have a vanity or a scenario which we call as the stem. If we go for the anatomy of the MCQ, so this is the stem, and this is the leading question, and then these are the option, and student have to select one answer, the correct answer, which we call is the key, and the other they are known as the distractors, the B, C, and D. Suppose the option A is the correct answer, so this option A is the key, and the B, C, and D they are the distractors. So यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे थे कि if there is some elaboration of the case, if there is some text added to the set scenario, so then it will be called as the context rich question. But if there is a direct straightforward question, that suppose the mechanism of the posterior dislocation is, so बजाय इसकी अगर हम थोड़ा सा इसको कंटेक्स्ट रिच में कन्वर्ट करें और फिर इसमें क्वेश्चन की गई कि व्हाट कैन बी द मैकेनिज्म ऑफ दैट पोस्टीरियर डिस्लोकेशन, या यहाँ पे हम पेशेंट की कुछ सीनियर एक रेडियोग्राफिक इमेज दे दे और फिर उसमें देखे कि वहाँ पे एक डिस्लोकेशन जो है मौजूद है और इसका मैकेनिज्म जो था ये था. अब इस डिस्लोकेशन को देखते हुए व्हाट वाज द मैकेनिज्म, अब स्टूडेंट हैव टू चेक कि भाई रेडियोग्राफिक इमेज में तो देयर इज पोस्टीरियर डिस्लोकेशन एंड द मैकेनिज्म इज. तो इससे थोड़ा सा जो है हम उसकी जो कंटेक्स्ट रिच ऐड करके उसकी जो है कंटेंट वैलिडिटी जो है एंड फ्रेश वैलिडिटी और भी इंक्रीज कर सकते हैं. दो जरूरी नहीं है, गलत नहीं है, वी मे हैव द कंटेक्स्ट फ्री सम टाइम. ये जरूरी होता है कि हम स्पेसिफिकली बेसिक साइंसेस में much of the MCQs they are the context free, but if they are the context rich, so they will be much more better than the context free MCQs. The next is the R type, or the no, also known as the extended matching item, EMI or the EMQ, or ye these are the uh, modification, or we can say that the extension of the MCQ. हमने MCQ में डिस्कस किया कि वहां पर 3, 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंडेड मैचिंग आइटम एंड द कॉमन ए टाइप MCQ दैट इज कि इनमें जो नंबर ऑफ ऑप्शन जो होते हैं ये 5 से 26 तक हो सकते हैं, मतलब दिस इज द रेंज. वहां पे 3 to 5 था, यहाँ पे 5 to 26. एक डिफरेंस तो ये हुआ. व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन
an MCQ, an A type MCQ and R type. ये जो extended matching है इसको R type MCQ कहा जाता है, एंड जो कॉमन MCQ जो प्रैक्टिस में है उसको कहा जाता है द A type MCQ। वहाँ पे हमने एनाटमी डिस्कस की कि इसकी एनाटमी जो है पहले स्टेम होता है, फिर एक लीड इन क्वेश्चन होता है, फिर इसकी ऑप्शन होते हैं। लेकिन इसकी एनाटमी अगर हम देखें दिस एक्सटेंडेड मैचिंग आइटम की, तो सबसे पहले जो है ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन के बाद लीडिंग क्वेश्चन होता है, फिर स्टेम होता है, फिर वहां पे स्टेम। तो ये कंप्लीटली अपोजिट सीक्वेंस जो है, ये कंप्लीटली अपोजिट ऑफ द ए टाइप। तो ये दो मेन डिफरेंस है, एक तो ऑप्शन देयर आर मोर देन द ए टाइप, इन द आर टाइप में ऑप्शन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द ए टाइप, एंड वहां पे जो सीक्वेंस है ए टाइप में दिस इज द स्टेम, देन देयर इज लीडिंग क्वेश्चन, देन द ऑप्शन। जबकि आर टाइप में ऑप्शन जो होते हैं ये टॉप पर होते हैं, दे आर मोर इन नंबर एंड दे विल बी ऑन टॉप एंड द स्टेप विल बी इन द बॉटम। बाकी जो इसकी एडवांटेजेस हैं, नॉट रिक्वायरिंग एन एक्सपर्ट फॉर द चेकिंग एज वेल एज अदर जो हमने डिस्कस की, दे ऑल आर सिमिलर फॉर बोथ द ए टाइप एंड द आर टाइप। दिस इज एन एग्जांपल। यहाँ पे देयर इज a number of conditions, articular cartilage and still the advascular osteogenic word। और फिर यहाँ पे कुछ questions होंगे and student have to select that which according to this question which answer is much more fit for that। जैसे for example, if you look at the question 2, that this structure contain a secondary center for ossification during the bone development। So what is that structure? This is the periosteum, this is the epiphysis, this is the articular cartilage, this is the primary ossification center, this is medullary cavity। So he have to select among that huge number of options। तो इस तरह की भी MCQs जो है हम ऐड कर सकते हैं, एंड these will be known as the R type MCQ। The next is the key features question. Again, this is much of the examiners, they are not known to these sort of assessment method, and that's why that is not commonly in practice। These questions are basically short clinical cases, they are scenarios, और उसके बाद जो एक सिनेरियो के बाद कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन होती हैं, और उस क्वेश्चन के स्टूडेंट्स दे आर आस्क्ड टू आंसर सच क्वेश्चन। But key feature questions, they are mostly asked when we are assessing the clinical decision making, the clinical reasoning, the differential diagnosis, and the high level which related to the patient, and the उनकी जो problem solving ability है, skills है उनकी problem। तो ये हम उसमें अगर check करना चाहते हैं, so they are the best option, the key feature या the क्यों they are the best option for that। So this is one of the example of the that KFQ, which is the um, question, and question will have some information, and on the basis of this information then there will be a question, rather than it will be an MCQ। So mostly the answers will be related to a clinical decision making, related to a problem solution। If they are known to the solution, so they will just select the best answer, the right answer। But if they are unknown to the case, if they are unknown to the clinical scenario, so obviously they will have some difficulties in selection that what will be the next step। So the next is the short answer question, the is AQ or the long answer question। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि R type and A type, they are the different types of question, but mostly they are sharing the same characteristic। Similarly, the short answer question and the long answer question, they are different assessment method, but mostly जो characteristic है ये दोनों एक दूसरे से share करते हैं। So that's why हम जो है short answer question को ज्यादा डिटेल से डिस्कस करके then we will just skip the long essay question। We are going to end this session। 5-10 मिनट के बाद दोबारा से हम एक लिंक सेंड करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे about the short answer question, then the modified essay question, and the last we will discuss this new method which is the script concordance test। And after that we will start the next, which is the seminar performance। I'm sending the link inshallah in the next 5-10 minutes, and
ये उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी रिकॉर्डिंग सेव करने में, तो जैसे ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाए मैं लिंक सेंड रीसेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।